Yes, students, we will discuss sialographic appears in Sjogren's syndrome. ब्रीफ बता रहा हूँ आपके बारे में कौन सी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. बेसिक्स ऑफ Sjogren syndrome, सियोलोग्राफी टेक्निक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सियोलोग्राफी. देन पारोटिड ग्लैंड की सियोलोग्राफिक पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे. देन हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न और सियोलोग्राफिक पैटर्न में क्या रिलेशन है आपस में. एंड फाइनली सियोलोग्राफिक पैटर्न इन Sjogren syndrome. So Sjogren syndrome briefly, we all know primary Sjogren syndrome होता है and secondary Sjogren syndrome. Primary Sjogren syndrome, dry eyes and dry mouth, xerostomia and keratoconjunctivitis टीका. Then secondary Sjogren syndrome में dry eyes and dry mouth के अलावा any connective tissue disorder हो सकता है. That connective tissue disorder can be systemic sclerosis, erythematosus or this phenomena. So finally, Sjogren syndrome can have neuropathies in the form of cranial neuropathy or peripheral neuropathy. Sjogren syndrome was described by Sjogren in 1933. He was a Swedish scientist. Secondary में there is associated connective tissue disorder, जैसे मैंने पहले ये कहा. Sjogren syndrome is comparatively progresses slowly and there are milder ocular symptoms. ओवरऑल Sjogren syndrome की अगर हम बात करें, there is increased risk for pseudolymphoma, Hodgkin's lymphoma and salivary gland malignancy. So there is dry tongue, oral is atrophic and secretions are thick. That means xerostomia के बाद conjunctivitis से क्या हो सकता है, dry eyes, blurred vision, burning and itching. हमें पता है कि oral manifestations के बारे में. There is dryness, there is difficulty in swallowing dry food, inability to speak, dental caries, problems in wearing dentures, because primarily सलेवा की कमी होती है. इसके लिए अगर ओरल म्यूकोसा को देखा जाए, इट इज ड्राई, इट इज रेडेंट एंड इट इज स्टिकीनेस. उसके बाद देयर इज एट्रोफी ऑफ टंग, सलेवा बहुत कम होता है, क्लाउडी एंड एनलार्जमेंट ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स मिलती हैं Sjogren सिंड्रोम में. अब आइए सियोलोग्राफी इन Sjogren सिंड्रोम. सबसे पहले टेक्निक क्या होता है. रेडियोपिक डाई, जो ज़्यादातर केसेस में आयोडीन बेस्ड डाई होती है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी डक्ट. Sialography is used to evaluate number one dilatation of salivary duct, number two ductal obstruction, and number three to see the calculus in the duct. Sialography की कुछ disadvantages होती हैं. For example, number one contrast allergy, acute inflammation या ज़्यादातर केसेस में एक infection of salivary gland हो सकता है. Now, sialographic appearance in normal parotid gland. Parotid glands में when dye is injected in the duct, the main duct is the main trunk of the tree. So the dye goes in main duct, prominent. के बाद the dye goes in excretory duct, striated ducts and intercalated duct. So overall main जो trunk है, के बाद जो branches हमें मिल रही है and सब branches. Sialographic appearance नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड का बिल्कुल एक ऑटम में या विंटर में एक ट्री का पैटर्न होता है. दैट इज द नॉर्मल सियोलोग्राफिक अपीयरेंस इन नॉर्मल ग्लैंड. Overall, there is tree, branches, there is no fruit. We call it leafless tree appearance. We have to remember normal sialographic pattern, that of a tree we see in winter or autumn. Sjogren syndrome में क्या होता है, we know lymphocytic infiltration होती है, T lymphocytic infiltrates मिलते हैं,
There are hyperplastic ductal epithelial cells मिलते हैं. Then there is obstruction of ducts. Then there is acinar atrophy. Then there is fibrosis. अब इसका सियोग्राफिक अपीयरेंस में मेन डक्ट में तो डाई जाएगा ही जाएगा एंड देन इट इज ऑब्जर्व्ड. सो द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री इज ऑब्जर्व्ड, मेन डक्ट के बाद ओवरऑल डक्टल पैटर्न की ऑब्स्ट्रक्शन होती है. डक्ट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड. सो उसके बाद इसका रीजन क्या है? अब ब्रांचेस कम होंगी. सो ब्रांचलेस, थोड़ा सा कम, छोटी 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 ब्रांचेस होगी. देन फाइब्रोसिस एंड एसिलर एट्रोफी तो ही हो है ही. सो देयर इज एक सा ओवरऑल द ट्री इज देयर. विंटर में जो ट्री था वैसा ही था. ये थोड़ी से इसके ब्रांचेस कटी हुई है. दूसरा क्या है, जब ये डक्ट जाता है उसके बाद ये फैल जाता है. एक्सट्रावेजेशन ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल हो जाता है. या फैलना दैट इज ड्यू टू dysfunction of tight junctions between ductal cells. ये बिल्कुल ओवरऑल के बाद ये वाला जो हमारा डाई है दैट इज एरियाज में ये ज़्यादा मिलता है, सर्टेन एरियाज में कम मिलता है. ओवरऑल इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और एरियाज. ठीक है, स्नोई ग्रुपी ऑफ आइलैंड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. के बाद दैट इज कॉल्ड एज द फ्रूट लीडन appearance but branchless. So branchless fruit laden tree is also called as cherry blossom tree or is also called as the snowstorm. अभी proper snowstorm appearance. So briefly, this cherry blossom appearance, the contrast material gets extravasated. These areas are similar to fruits on the tree. The main trunk is intact. There are atrophied, intercalated and striated ducts. तमाम चीज़ें मिला के ओवरऑल come to the conclusion that it is branchless fruit laden tree appearance. तो ये आज का टॉपिक था. थोड़े से छोटे छोटे एमसीक्यू. True about sialography. Remember, sialography is invasive technique. It leads to radiation exposure. There is radio opaque dye जो मैंने पहले भी कहा आपको. तो नंबर 3 ऑप्शन रेडियोल्यूसेंट नहीं है, ये रेडियो ओपिक है. तो हियर देयर इज द राइट आंसर इज देयर इज रेडिएशन एक्सपोजर. ग्लास एलर्जी, एक्यूट इन्फेक्शन एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो होगी ही होगी. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. Branchless fruit laden tree in Sjogren's syndrome is due to, it is not due to malignancy, it is not due to calculus, but it is due to presence of option number 3 is the right option, presence of lymphoepithelial lesions. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 3, lymphoepithelial lesions are seen in Sjogren's syndrome. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन. एक और लास्ट वाला एमसीक्यू है. Sjogren's syndrome has, इसलिए कहा जस्ट फॉर रिवीजन, has been here I have discussed it here. It is due to sparse ductal branching pattern. Number 1 ये भी correct है. There are lymphoepithelial infiltrates. There is acinar atrophy. There is ductal obstruction. So all of the above is the right option. Basically, it is just to revise.